to my YouTube channel NT Tutorial. This is Nushat here and I'm teaching you some basic grammar. So once again I am back with basic grammar. Okay, you know बच्चों, आज मैं बहुत ही interesting entertaining topic पढ़ाने वाली हूँ, that is the article which we use in our daily life, जिसे हम जनरली अपने daily life में use करते हैं. तो let's understand article. What is article? किसे कहते हैं हम article? So just look here. Article, you know, a and the are called articles. A and the को हम article कहते हैं. Okay, look here. A and the are called articles. Articles. Okay. A and the को हम articles कहते हैं. Now look, just how many types of articles are there? Article कितने तरह के होते हैं? You know, there are two types of article: definite article and indefinite article. Definite article and indefinite article. ठीक है. A or N. Look here. You know, the is called definite article and A or N are called indefinite article. You know why? The को हम definite article क्यों कहते हैं? Because it is used for definite person or thing. कोई निश्चित person और thing के लिए हम the का use करते हैं. Okay, which we know, जिसके बारे में हम जान रहे हैं. Okay, and A और N generally हम किसी के लिए भी use कर सकते हैं, but A और N is used for singular nouns. Singular nouns के लिए use करते हैं. Got it? So remember, इसे याद रखना आप notes में. A और N is used, are used for singular nouns. Singular nouns के लिए हम इसे use करते हैं. Singular noun. Got it? Now let's understand uses of A or N one by one. हम understand करते हैं A और N की uses कहाँ पे होती हैं. तो just look here. Getting it? Till here are you getting? यहाँ तक समझ में आ गया? Very clearly. Now look here. Uses of A. Uses of A. Where A is used. A की use हम कहाँ करते हैं? तो generally A is used with consonant letter. First, A is used with consonant. A is used with before. A is used before consonant letter. Consonant letter के साथ हम ये A के use करते हैं. Okay? Before the word which starts with consonant letter. Okay, you know, A का use हम वहां पे करते हैं. Okay, before that word which start with consonant letter, जो consonant letter से start होते हैं. Example, just look here. बस, a bus, horse, a horse, girl. Just look here. Girl, then other. Got it? Next is A is used, once again करेंगे. A is used before the word which starts with E or U, but pronounced as U. Example, university, united,
बिफोर दोज वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद ई और यू, जो ई और यू से स्टार्ट तो होते हैं, ओके, बट दे आर प्रोनाउंस्ड एज यू, नॉट अ, नॉट ए। वो वॉइल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, दे प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज यू। गॉट इट ना? तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया? यूनिवर्सिटी, बिफोर यूनिवर्सिटी आई इज यूज्ड, बिफोर यूनाइटेड आई इज यूज्ड, बिफोर यूरोपियन, लुक यूरोपियन, यूरोपियन से पहले क्या यूज करेंगे हम? दैट इज अ। यू नो व्हाई? बिकॉज हियर ई इज गेटिंग प्रोनाउंस्ड एज यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यूजेस, ओके, सो जस्ट यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, but if you think better you can note down also in the notebook. Next, third use is before. A is used before the word which starts with O, which starts with O, but pronounced as va. Example, a one-eyed man, a 1 rupee note. Clear? Here A is used before those words, before the word which starts with O, जो O से start तो होता है, but it is not pronounced as O, it is pronounced as V, means consonant sound आ जाते हैं. Then before that what will you use? A is used. Clear? So these were the uses of A, means A. Now let's understand the uses of N. N के use कहाँ पे होते हैं? Just we will understand now. अब हम understand करेंगे. Look here, uses of N. मजा आ रहा है? Getting it? Understanding very properly? Now look here, uses of N. Where N is used? N की use हम कहाँ पे करते हैं? Okay, just look here. जिस तरह से we use A before consonant sound. Similarly, N is used before vowel sound. So here, N is used before the word which starts what? Which starts with vowel letters, जो vowel letters से start होते हैं. Example, just you look here, umbrella. Umbrella is vowel, so what will you use here? An umbrella. Egg, what will you use? An egg. You know why? Because vowel is here, the first letter of the word is vowel. जो word vowel से start होते हैं, okay, then with that those words we use N, हम N use करते हैं. Clear? Next is N is used before the words which starts with O. Sorry, which starts with H. H से start होता है, but here H is silent. Example, R, an O. Okay, honorable man, an honorable man. Just look here. अब हम यहाँ देखेंगे. N is used before the word which start with H. जो H से start तो होता है, but H is not pronounced. H is silent here. यहाँ पे H बिल्कुल silent रहने वाला है. Okay? Means कुछ ऐसे words होते हैं जहाँ पे H silent होते हैं. Just look here, our, an our. Okay? So just here H is silent. You are just here pronouncing as our. So here N is used. Okay? Similarly here, honorable. Honorable आप नहीं पढ़ती. क्या you don't never pronounce as honorable. We usually pronounced as honorable. Means H is silent here. H हमारा silent होता है. So what will you use here? N. Clear? Now next, third uses क्या है हमारा? N is used
used before the words which starts with consonant sound, consonant later, but pronounced as vowel sound, okay. Example, MLA, NMLA, SDO, NSDO, SHO, NSHO, okay. Now just look here. Here M, what is MLA? M क्या है? It is consonant, okay. But here before pronouncing M, okay, we are here. What is coming? A. So if any word start with consonant letter, but the sound is vowel. लेकिन sound अगर vowel है, then what will you use here? N. Just like MLA. M consonant है, but before means pronouncing it, A is coming. So what is being used here? Vowel sound. That's why हम यहाँ पे N की use करेंगे. Clear? No any problem? Now let's see the use of the. अब हम देखेंगे the की use कहाँ पे होता है. You know, the is such a word, okay, means such an article, ऐसा article है which is used for so many things, so many different things. Just look here. The is used before the name of heavenly, before the name of stars, planet. Example, the moon, the sun, means before the name of any heavenly bodies. Next, before the name of directions. डायरेक्शन के नेम के पहले भी हम द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट, ओके, गॉट इट. द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ओके. बिफोर द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स बिफोर द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग. एग्जाम्पल, द ताज महल, दिस इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वन ऑफ द 7 wonders. Next, before the name of any train, like the Rajdhani Express. Before the name of mountains, पर्वतों के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं. Example, the Himalayas. Before the name of newspaper के नेम के बिफोर भी हम लगाते हैं the, means we add the before the name of newspaper. Example, the Times of India. Before the name of river, नदियों के नाम के पहले भी हम लगाते हैं. You know what? For example, the Ganga, the Yamuna. Before the name of ocean के नेम के पहले, फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन ओशन. गॉट इट? और देयर आर सो मेनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस है. ओके, बिफोर द नेम ऑफ कार्डिनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द नेम ऑफ कार्डिनल नंबर. व्हाट डू मीन बाय कार्डिनल नंबर? यू नो, जिससे आप बोलते हो यू रीड द फर्स्ट, the second, the 10th. For example, the first. She is the first topper of her school. Okay. He is the 10th topper of his class. Okay. Next is cardinal number done. Before the name of superlative degree. Superlative degree के पहले भी हम द के यूज करते हैं. Got it? Before the name of superlative degree. For example, he is the best. For example, the best. You know, good का third form है good, better, best. Before the name of superlative degree, we use the. Other, before the name of bank के नेम के पहले हम यूज कर सकते हैं the SBI. Okay. Before the name of any factories, किसी फैक्ट्रीज के नेम के पहले भी हम यूज कर सकते हैं
Okay, before the name of great personalities can, great personalities great personalities के before we also use the. For example, the Mahatma Gandhi. Before the name of religious book, धार्मिक बुक के नेम के बिफोर भी वी यूज रिलीजियस बुक. रिलीजियस बुक के पहले भी हम यूज करते हैं द. फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द रामायणा, etc. So many. Okay. Before the name of religious book, the Ramayana, the Quran, the Bible. Okay. There are so many uses of the. Okay. That के बहुत सारी uses है. Okay. So I think you will be getting very properly. You can do it. You understood better. Okay. Once again I'll meet you in my next video with another topic. Till then, bye bye.